As Sadashiva, I accept your Maheshwara Puja as a personal service. I accept not just as food, all the 13 danas you are supposed to give. The cow, land, gold, grain, cloth, umbrella, paduka, all the 13 dana you are supposed to give. I accept all 13 in the form of this Maheshwara Puja and commit with you all. I liberate all of them and all your ancestors and bring completion to all of you. And if you are doing it on your own, for yourself, I commit with you. I liberate you from all the sins and karmas other than Guru Droha. So don't do only that nobody can liberate. Other than that, I liberate you from everything else. Blessings. The monastics can receive that Pinda. This is the food offered to the departed souls. Pinda Prada.
ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உங்களை நீ பரிமாற ஆனந்தீஸ்வரி ஆன்ம ஆனந்தம் பொங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உங்களை நீ பரிமாற ஆனந்தீஸ்வரி ஆன்ம ஆனந்தம் பொங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தண்ணீரை நீ ஊற்ற பன்னீரை மணக்கும் வாழ்வு கண்ணீரும் இனி இல்லை ஆனந்தீஸ்வரி The best thing you and the devotee did not even have 1 second of he was not perturbed at all. He said, yes, Prabhu, I'll do it. And cut, you can't have tears. If you have tears, I will not eat. He says yes. And finally, when they cut, the moment immediately Mahadeva appears and says, enough, stop. I've just to come to test your authenticity. And he gives life to the kid and enlightenment to all the three. So traditionally the ritual is very powerful and very old, very oldest recorded ritual. Come on, let's go and sit, only then it will be ready. Let's gather. Let's first go for Maheshwara Puja and gather for the next session. After that, thank you. Be blissful. प्रेम मुदित मन से कहो नित्य नित्य नाम 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 அன்னமிடும் அன்னையும் நீ ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆதிசக்தி நாயகியே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி அன்னமிடும் அன்னையும் நீ ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆதிசக்தி நாயகியே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி கண்ணமிடும் கருமங்களை மாற்றி இங்கு கருணையுடன் வாழ்வில் கரையேற்றுகிறாய் ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சம்ஸ்காரங்கள் கரைந்து இங்கு ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி நாங்கள் சம்சார கடல் கடக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஏழுடல்கள் கடந்து நித்ய வாழ்வினிலே நிலை பெறவே நித்யானந்த ஸ்பூரணம் தந்தாய் ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தெய்வத்திற்கு படைத்த உணவை ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி பிரசாதமாய் உண்டதுண்டு ஆனந்தீஸ்வரி
பெற்றிடவே பெற்ற வரம் யாம் அறியோம் ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. இட்டிலியை நீ அளிக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, வாழ்வில் இடர்கள் நீங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. இட்டிலியை நீ அளிக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, வாழ்வில் இடர்கள் நீங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. சட்டினியை நீ அளிக்க சட்டனவே சங்கடங்கள். As Sadashiva, I accept your Maheshwara Puja as a personal service, and I accept not just as food, all the 13 danas you are supposed to give. The cow, land, gold, grain, cloth, umbrella, paduka, all the 13 dana you are supposed to give. I accept all 13 in the form of this Maheshwara Puja and commit with you all. I liberate all of them and all your ancestors and bring completion to all of you. And if you are doing it on your own, for yourself, I commit with you. I liberate you from all the sins and karmas other than Guru Droha. So don't do only that. That nobody can liberate. Other than that, I liberate you from everything else. Blessings. The monastics can receive the Pinda. This is the food offered to the departed souls. The Pinda Prasada. மறையுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. சாம்பாரை நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய நடமாடு மலை என்று திருவதேடு மலை சோதியாட அஞ்சோழு மலை நீதி தழைக்கு மலை ஞானத்த போதனை பாவாவென்றழைக்கு மலை திருவண்ணாமலையே நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஓங்கார ரூபிணி நீ ஆனந்தீஸ்வரி. ஓங்கார ரூபிணி நீ பாங்காக பரிமாற பாவங்கள் கரையுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. உங்களை நீ பரிமாற ஆனந்தீஸ்வரி, ஆன்ம ஆனந்தம் பொங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. உங்களை நீ பரிமாற ஆனந்தீஸ்வரி, ஆன்ம ஆனந்தம் பொங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. தண்ணீரை நீ ஊற்ற பன்னீரை மணக்கும் வாழ்வு கண்ணீரும் இனி இல்லை ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. I bless you all. Let you all open all your three eyes. Devotees are offering the Maheshwara Puja at the Divine Lotus Feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, BHAGAVAN Nithyananda Paramashivам. Now, we request all the monastic members of the Nithyananda order to be seated with your head, neck, and spine in a straight line. Bring your awareness to the Ananda Gandha.
And please be in a space of deep restful awareness and gratitude. Now, kindly have listening to the truths behind the Maheshwara Puja. And if you authentically cognize, which is internally process, understand and respond that you agree to the truths behind the Maheshwara Puja, which will be told now. If you agree, please say yes loudly at the end of each declaration. The truth behind the Maheshwara Puja is that I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivamam, is the Chinmaya Vigraha, the embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivamam, is a pure channel for complete completion to be achieved for all the departed souls, and for completion to be achieved for all the participants with the departed souls. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that during the Maheshwara Puja, all the monastic members of the Nityananda order become a pure channel for complete completion to be achieved for all the departed souls, and for completion to be achieved for all the participants with the departed souls. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that offering of the Maheshwara Puja will bestow complete completion for all the departed souls whose photo or horoscope is mentioned here, and completion will be bestowed on all the Maheshwara Puja participants with the departed souls for whom they are offering Maheshwara Puja here today. Yes. We'll now begin the rituals of the Maheshwara Puja. We'll begin with the Sadguru Vandanam. Fold your hands in the Atmanjali Mudra. Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrusham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavaditam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nityanandeshwara Paramashiva Samarambha Nityanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyama Nityananda Paryantam Vande Guru Paramparam Lalate Tripundri Nitiladhrita Kasturi Tirakaha Spuranmaladhara Spurita Gadikau Bina Vasanaha Dadhano Dushtaram Shirasi Bhanirajam Shashikalam Pradipat Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. We'll now chant the Sankalpa mantra, the conscious resolution. Clasp your right hand in your left hand, keep both your hands on your right thigh. Mamopatta samasta duritakshayadvara Bhagavat Sri Nithyananda Paramamashiva Prityartam Adhya Purvokta Evam Guna Visheshena Visishtayam Asyam Shubhatito Nityananda Gotrodbhavasya Purvaphalguni Nakshatre Simharaso Jatasya Girish Joshi Namadheyasya Swati Nakshatre Jatayaha Rupa Joshi Namyaha Magha Nakshatre Simharasho Jatayaha Meena Joshi Namyaha Sagudumbhasya Jiang Xiaohan Namyaha Wang King Xiang Namyadheyasya Wang Qiang Cheng Namadheyasya Jiang Chuan Jiang Namadheyasya Shao Qinji Namyaha Zhu Bing King Namyaha Sakudumbhasya Nityananda Gotrodbhavayaha Vishakha Nakshatre Tularasho Jatayaha Jessica Martin Namyaha Pushya Nakshatre Jatasya Mike Schroyer Namadheyasya Genova
क्रिस्टेन्सन् नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे जातायाः जोर्डन् द ग्रूट् नाम्याः सकुटुम्बस्य च ब्रह्मकपाल विष्णुपाद कालभैरववपुस्वरूप श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्त श्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षी सुन्दरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञानविश्रुत सकलनिगमागमसारभूत द्राविडवेदप्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रया न गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्न काहलादि समस्त बिरडावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षाव्ययापवर्गवर्ष विश्रान जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपन शाख्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार्हद्वधोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ गद्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्याद्यनवच्चिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम पूर्वोक्तानां सर्वेषां जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम एतेषां दिवंगतु बंधुमित्रवर्गाणां विदेह मुक्ति प्राप्त्यर्थम च परमशिव स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव मुखेन महेश्वर पूजाख्य कर्म करिष्ये। Om Abhobhasprisya. We'll now be chanting the 15th chapter of the Srimad Bhagavad Gita. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्भ त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवत्वेषिणीम्। अथ पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।
Sri Bhagavan says, this imperishable banyan tree of life, symbolized by the Ashwatha, has its roots above with the leaves and branches spreading below the earth. The leaves are said to be the Vedic hymns. One who knows this eternal tree becomes the knower of the Vedas. Adhaschordhvam prasrutastasya shaka guna pravriddha vrishayah pravalaha adhascha mulyanyanusantatani karmanubandhini manushya. The branches of this tree extend below and above the earth, nourished by the tree human attributes guna. Its buds are the sense objects. This tree also has roots going down, and these are bound by the resultant actions of humans. Narupamasye natathopalabhyate nanto na chatir na cha sampratishtha ashwattamenam suvirudamulam ashanga shastrena dhridena chitva. The real form of this tree cannot be perceived. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Tatah padam tat parimargitavyam yasmin gata nani vartanti bhuyaha tameva chadyam purusham prapadye yatah pravritti prashritat purani. One must then seek that place from which, having gone, one never returns, and surrender to the Supreme Being from whom all the activities started from ancient times. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kamaha dvandvair vimukta sukha dukha sangyair gacchantya mudah padhamavyayam tat. Those who are free from pride, delusion and attachment, those who dwell in the self, who are done with lust, who are free from the dualities of joy and sorrow, not confused, and those who know how to surrender to the Supreme Person, attain the eternal consciousness. Na tad bhasayate suryo na shashanko na pavakaha yad ghatva na nivartante tadhama paramam mama. That supreme space of eternal consciousness, my consciousness is not illumined by the sun, nor by the moon, nor by fire. Those who enter that space never return to this material world. Mamaivamsho jiva loke jiva bhutas sanatanaha manashyasdhani indriyani prakritisthani karshati. The living entities in this conditioned material world are a portion of my eternal self. In this conditioned material world, they are attracted by the six senses, which include the mind dwelling in Prakriti, the active energy principle. Shariram yadavapnoti yachatyukramati shvaraha grihitvaitani samyati vayurgandhani vashayat. The spirit in the mind body living in this material world moves from one body to another, carrying these just as air carries aroma. Strotram chakshusparshanam cha rasanam ghranameva cha adhisthaya manaschayam vishayanupasevate. The living entity, the spirit, leaves one body, takes some other body, and gets new eyes, ears, nose, tongue, and sensing body according to the samskaras it had in its causal layer, and enjoys the new mental setup. Utkramantam stitam vabhi bhunjanam vagunanvitam vimudhananu pashyanti jnana chakshushaha. Fools in ignorance do not perceive the spirit being united with the gunas as it enters, enjoys, and leaves the body. The one whose inner eye is open clearly perceives everything. Yatanto yoginaschainam pashyantyatmanyavasthitam yatanto prakritatmano nainam paschyancha chetasaha. The serious practitioner of yoga, with an understanding of his self, can see all this clearly. Those who do not have an understanding of the self, however much they try, cannot see. Yadadidyagadam tejo jagadbhasayate khilam yachandramasi yachagno
Tattejo vidhi mamakam. The light of the sun and the light of the moon and the light of fire, all their radiance is also from me. Gama vishya cha bhutani dharayam yahamojasa pushnami chaushadhi sarva somo bhutva rasatmakaha. Entering into earth, I support all beings with my energy. Becoming the watery moon, I nourish all plant life. Aham vaishvanaro bhutva praninam dehamashritah pranapana samayuktah pachanyannam chaturvidham. I am the fire of digestion in every living body, and I am the breath of life exhaled and inhaled, with which I digest the fourfold food. Sarvasya chaham hridi sannivishto matta smritirjnanam apohanam cha vedaischa sarvairahameva vedyo vedanta kridveda videva chaham. I am seated in everyone's heart, and from me came memory, knowledge, and their loss. I am known by the Vedas indeed. I am the creator of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Dvavimo purusho loke ksharascha eva cha ksharas sarvani bhutani kutasto kshara uchyate. There are two things, the perishable and the imperishable in this world. There are the living beings who are perishable, while there is the unchangeable, the imperishable. Uttamah purushastvanyah paramatmetyudahritah yo lokatrayamavishya bibhartyavyaya ishwarah. Besides these two, there is the Supreme Purusha, the Lord Himself, who pervades and sustains these three worlds. Yasmaksharamati aksharaatapi chottamah atosmi loke vedecha pratitah purushottamah. As I am transcendental, beyond both the perishable and the imperishable and the best, I am declared both in the world and in the Vedas as the Supreme Person, Purushottama. Yo me mama sammudho janati purushottamam sa sarvabhid bhajati mam sarvabhavena bharata. Whoever knows me as the Supreme without a doubt is to be understood as the knower of everything, and he worships me with all his being. O son of Bharata, iti guhyatamam shastram idam muktam maya nagha etad bhudva buddhiman syat kritakrityascha Bharata. This is the most profound teaching taught by me, O sinless one, and whoever knows this will become wise, and his actions will bear fruit. Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Yogo Nama Panchadashodhyayaha. In the Upanishad of Srimad Bhagavad Gita, the scripture of yoga dealing with Brahma Vidya Yoga Shastra, the science of Brahman, the Supreme Absolute, in the form of Sri Krishna Arjuna Samvada, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna. This is the 15th chapter named Purushottama Yoga, the yoga of the Supreme Being. Vasudeva Sutam Devam Kamsajanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. We'll now perform the Manasa Puja, the internal worship. Om Hridpadmamasanam Dadyat Sahasrarachyutam Rutaihi Padyam Jaranayor Dadyat Manastu Arghyam Nivedayet Tena Mritena Achamaniyam Snaniyam Tena Chasmridam Akashatattvam Vastram Syat Gandhasyat Gandhatatvagam Chittam Prakalpayet Pushpam Dhupam Pranan Prakalpayet Tejastatvam Cha Deepartham Naivedyam Syat Sudham Buddhihi Anahatatvinirghanta Vayudatvam Cha Chamaram
सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं ददा भावपुष्पैः अर्चयेद् भावगोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमोहगम् मदम्बं च द्वेषाक्षोभगो तथा अमात्सर्यम् अलोभं च तसपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशे भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्द परमशिवम्. We'll now begin Upachara Puja, the external worship. Om Hrim Etat Padyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Esharkyaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Achamaniyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Snaniyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Vastram Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Ershad Gandha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Sachandana Pushpam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Sachandana Bilva Bhatram Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Eshad Dhupaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Eshad Deepaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Sobagarna Naivedyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Panarthodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Om Hrim Idam Punarachamaniyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. Aratrikam Om Tangrahanyestya yajate imam janatagum tanganhaniti Dvadasharatnirashana bhavati Dvadashamasa samvatsaraha Samvatsarameva varundhe Maunji bhavati Urgvai munjaaha Urjameva varundhe Chitranakshatram bhavati Chitram va etat karma Karpuragoram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada vasantam Hridayarvinde Bhavam bhavani Sahitam namami Bhavam bhavani Sahitam namami Bhavam bhavani Sahitam namami. Aradrikam samarpayami Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Charanakamaleebhyo Namaha. Pushpanjalihi. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandala Karam Vyaptam Yena Characharam
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रधानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवच्छ्रीनित्यानन्द परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नित्यानन्दम्। All the sannyasis of the Nityananda order are now requested to distribute and partake the Pinda prasadam. Now, we will be chanting the names of those who are offering the Guru Dakshina today. ममोपात्ता समस्ता दुरितक्षय द्वारा भगवच्छ्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ पुनर्वसु नक्षत्रे कर्कटक राशो जातायाः ओषडी अमरशेखर नाम्याः सकुटुम्बस्य फ्योडोर मशरो नामधेयस्य कन्याराशो जातायाः नरहस्दा शिखो मशरो नाम्याः सकुटुम्बस्य चाओलिन माई नाम्याः सकुटुम्बस्य KR सुरेन्द्रन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य थावांग लिंग नाम्याः झाओ शॉन लान नाम्याः सकुटुम्बस्य माँ एकपादाशक्तिनी उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जातायाः माँ एकपादशक्तिनी नाम्याः सकुटुम्बस्य कश्यपगोत्रोद्भवश्च ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशो जातायाः मिथिला पाण्डे नाम्याः सकुटुम्बस्य झाउचिम श्माल्स् नामधेयस्य हेड्विग श्माल्स् नाम्याः जर्ड गेर्ड श्लाइश्चर नामधेयस्य जीता हेम नाम्याः ग्वेंटर हेम नाम्याः नामधेयस्य सकुटुम्बस्य आनन्दशंकरी नाम्याः सकुटुम्बस्य फिलिप सिम्स नामधेयस्य सकुटुम्बस्य लीसा टोरेस सिम्स नाम्याः सकुटुम्बस्य जमदग्निगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशो जातस्य वेंकटरामन जे नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातायाः गायत्री वी नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशो जातायाः शुभिक्षा वी नाम्याः सकुटुम्बस्य शूठोंग्ज्यू नामधेयस्य चन्यू क्यू नाम्याः नामधेयस्य लिंजियान रन नाम्याः वांग्यप नामधेयस्य सकुटुम्बस्य माँ नित्यमहाजननानन्दा नाम्याः यिम क्वेन ली नाम्याः क्योंगफैंग वांग नाम्याः पिकविंग च्युंग नाम्याः सकुटुम्बस्य चान खाउचे नामधेयस्य चान फैट नामधेयस्य लियानमोय नाम्याः सकुटुम्बस्य पूषम नक्षत्रे कटकराशो जातायाः रथाराणी नाम्याः सकुटुम्बस्य रोसिता सैंग नाम्याः सकुटुम्बस्य
नित्यानंद गोत्रोद्भवस्य उत्तरायण नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य मीनाक्षी नारायणन नाम्याः सकुटुम्बस्य रोसिता चांग नाम्याः सकुटुम्बस्य लिम हाउ लैक नामधेयस्य सकुटुम्बस्य कुक्कुडिया गोत्रोद्भवायाः कृतिका नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य अमिता चौधरी नाम अधेयस्य गणेशराम नामधेयस्य चुकादेवी नाम्याः अमित नामधेयस्य नमित नामधेयस्य सकुटुम्बस्य अशोक देवजी पटेल नाम अधेयस्य सकुटुम्बस्य गांगेय गोत्रोद्भवस्य कृतिका नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य मुरली कार्तिक नामधेयस्य सकुटुम्बस्य मौद्गल्य सगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य श्रीनित्य सदाशिवात्मानन्दानामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे जातायाः मानित्य सदाशिवात्मानन्दानाम्याः पूर्वभाद्रपद नक्षत्रे जातायाः त्रिपुरानन्दभैरवी नाम्याः वीरेश्वर मनोहर नामधेयस्य नागसुशीला नाम्याः सकुटुम्बस्य सकुटुम्बस्य च मनसेप्सित सकल सद्भीष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं ज्ञानवैराग्य जीवन्मुक्तिप्राप्त्यर्थं श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपवगत श्री नित्यानंद परमशिव महेश्वर पूजा गुरुदक्षिणम् अहं संप्रददे। हरि ओम तत्सत्। सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ओम नित्यानंदम। Nityanandam, thank you for joining the Maheshwara Puja today. Nityanandam. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahashwara. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam.